Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss respiration in bacteria as well as reproduction in bacteria. So let's move to the class board. So dear students, respiration in bacteria. Another very important topic, it is important regarding short questions. लेकिन आजकल जैसे ट्रेंड है छोटे लॉन्ग क्वेश्चंस का, समटाइम्स जो पेयरिंग में चैप्टर आ जाते हैं तो उसमें एक जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है या बीच होता है, अगर वो ज़्यादा लेंथी हो तो एग्जामिनर क्या करता है उसके साथ छोटा एक क्वेश्चन डाल देते हैं. तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो एज वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 6, तो इसका जो पेयर है बेसिकली आमतौर पर जो पेयरिंग होती है इसकी चैप्टर नंबर 9 के साथ होती है. अगर चैप्टर 9 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर उस कंडीशन में ये चैप्टर नंबर 6 से ये वाला जो क्वेश्चन वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन आमतौर पर शॉर्ट या एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, so respiration in bacteria. So as far as respiration is concerned, तो dear student ये हमारी 5वीं क्लासिफिकेशन. पहले कौन सी पढ़ी थी हमने? नंबर 1 on the basis of shape, नंबर 2 on the basis of flagella, नंबर 3 on the basis of cell wall, and नंबर 4 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की on the basis of nutrition. और ये 5वीं क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, that is on the basis of respiration. So on the basis of respiration there are 4 types of bacteria. On the basis of respiration, there are 4 types of bacteria. Number 1 is aerobic. Aerobic bacteria. So aerobic bacteria, the bacteria requiring free oxygen. Basically, these are the bacteria which require free oxygen. These bacteria require free oxygen. And can grow in the presence of oxygen only. अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं तो they are unable to grow. Okay, so its example includes, for example,
Pseudomonas. It is basically an aerobic bacteria. ये clear? Number 2 are the anaerobic bacteria. So anaerobic bacteria, these bacteria do not require free oxygen. इनको free oxygen नहीं चाहिए, and can only grow in the absence of oxygen. तो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं वो एरोबिक, जो इसकी एब्सेंस में ग्रो करेंगे दे आर एनारोबिक. क्लियर? एंड इट्स एग्जांपल इज द स्पाइरोकीट्स and also the lactobacillus. आपने घर में देखा होगा कि मम्मी जी कैसे दही जमाती हैं. सो उसके लिए वार्म सा दूध लिया, उसके अंदर 1 या 2 स्पून जो होते हैं योगर्ट के डाले, दही के डाले, और फिर उसको आप गौर से देखिएगा और नोट कीजिएगा, बल्कि आपने नोट किया भी होगा कि उसको एयर टाइट कर देती हैं. ठीक है, जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर दही जमाना होता है तो उसको एयर टाइट किया जाता है. एयर टाइट करके फिर उसको रखा जाता है. कुछ घंटों के अंदर वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है. द रीज़न इज़ एयर टाइट करने का मकसद यह है कि ताकि ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अंदर ना जा सके उस बर्तन के अंदर. कि अगर बर्तन के अंदर ऑक्सीजन चली गई तो दूध से फिर दही सही तरह से नहीं जमता. और आप देखिएगा इसी तरह से होता है, अगर समटाइम्स सही तरह से दही ना बन रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप देखिएगा समटाइम्स इट इज़ के वजह से कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन एंटर होती रहती है कंटेनर के अंदर, जिस वजह से वो नहीं जमता. So these are the bacteria which can grow usually in the absence of oxygen. Number 3 are the facultative bacteria. So facultative bacteria, these bacteria can grow either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen.
मीन्स कि ये इन बिटवीन है, इन दोनों के दरमियान है। ऑक्सीजन मिलेगी तब भी ग्रो कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रही तो तब भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज अ फैकल्टेटिव। मतलब कि जो मिल गया वो शुक्र है। सो दिस इंक्लूड्स इकोलाई। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है ये चीज़ कि इकोलाई जो है ये एन एरोबिक फैकल्टेटिव है। इसके लिए एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें, इट इज एन एरोबिक फैकल्टेटिव। ठीक है। तो आमतौर पर ये बेटर तो यही इसके लिए है कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही ग्रो करे, मतलब कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ये है फैकल्टेटिव, क्लियर। सो एनारोबिक का मतलब है विच यूजुअली कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आगे चलकर मतलब कि इनके मज़ीद आगे कुछ कैटेगरीज भी हैं एनारोबिक की भी, कुछ फैकल्टेटिव होते हैं और कुछ ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट जो एनारोब होते हैं उनको ऑक्सीजन दे दिया तो वो मर ही जाते हैं, दे आर गोइंग टू डाई। लेकिन जो फैकल्टेटिव हैं वो आमतौर पर सर्वाइव कर जाते हैं, क्लियर। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज द माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक bacteria so very clearly understood if you look at the meaning. So micro means small, low. Aero means oxygen. Philic means loving. So low oxygen loving bacteria, clear. So these bacteria can grow in low concentrations of oxygen. Clear? High concentration, they will kill this bacteria, and it includes Campylobacter, okay, so that is its example. So that is the classification of bacteria on the basis of respiration. Now another important topic, which seems to be an unimportant, but it is good topic as far as long questions are concerned from board point of view, that is reproduction and growth in bacteria Yeah, so it is important. So first of all, I'm going to discuss the reproduction.
सो बुक में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का नाम लिया गया है. सो पहले रिप्रोडक्शन डिस्कस की हुई है, इसलिए मैंने इसको पहले रिप्रोडक्शन मेंशन किया है. सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ. Growth in bacteria or growth of bacteria means increase in the number of bacteria. Increase in number of bacteria. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ग्रोथ का मतलब उस तरह से नहीं जैसे हम आपस में लेते हैं ग्रोथ को, ठीक है. जैसे ग्रोथ का मतलब कि बच्चा पैदा हुआ, इतना सा ना हो, वो ग्रो करते 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 इतना बड़ा हो गया. सो मतलब इंक्रीज इन द साइज हम यूजुअली इसको लेते हैं. लेकिन जो स्पेसिफिकली हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, सो बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब है उनका नंबर इंक्रीज हो जाना. क्लियर. द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज इट्स ग्रोथ. जितना ज़्यादा नंबर, उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चले जाएगी, मीन्स कि उनके अंदर ग्रोथ हो रही है. अगर नहीं होगी तो ग्रोथ रुक गई है या वॉट एवर इट इज़. सो इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ. सो अब नंबर कैसे बढ़ेगा? जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे. तो रिप्रोड्यूस करने के लिए इनकी 4 स्टेजेस हैं. सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस in 4 stages. 4 स्टेजेस हैं. And by a process called binary fission. Called binary fission. सो जितने भी बैक्टीरिया वो इस प्रोसेस के ज़रिए ही ग्रो कर सकेंगे. दिस इज विच इज़ सिमिलर टू माइटोसिस. ये माइटोसिस से मिलती जुलती एक सेल डिवीजन है, जो कि माइटोसिस नहीं है. माइटोसिस या मियोसिस, इनके अलावा जितने भी सेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, वो माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इनमें माइटोसिस क्यों नहीं हो सकती या मियोसिस क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसके लिए ज़रूरी है कि द ऑर्गेनिज्म और द सेल हैव टू बी गो थ्रू अ फेज विच इज़ कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. विच इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. तो चूँकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से इनके अंदर माइटोसिस या मियोसिस नहीं हो सकती. लेकिन उससे मिलती जुलती, माइटोसिस से मिलती जुलती एक सेल डिवीजन है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन. बाय का मतलब 2, फिशन का मतलब स्प्लिट हो जाना. तो एक बैक्टीरियल सेल 2 बैक्टीरियल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन. एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? सो इसके स्टेजेस. So here is a bacterial cell. Its plasma membrane and its cell wall, and having the genetic material in it. Clear? So this is the parent cell. Now the first step is the parent bacteria or bacterial cell. It is more accurate. The first step is its cell enlargement. तो cell जो है इस size में थोड़ा सा increase करेगा. So as you can see, it is obvious from this diagram, इसका size और इसका size थोड़ा सा different है.
So first step is cell enlargement. Here, the first step is the cell enlargement. Cell enlarge हुआ, number 1. Number 2 is there is the duplication of or replication of its DNA. In the second step, the DNA is replicated. So here are the 2 copies of DNA. So this step is the replication of DNA, clear, or genetic material. Now is the third step. So in the third step, the plasma membrane pinches inward at the center, like this. Here. So in the third step, the plasma membrane pinches inward towards the cytoplasm, and then finally the cell wall pinches. Like this. When the nuclear material is equally divided, and finally what happens? Moves inward to divide cell into 2 daughter cells. So that is the fourth stage. And finally, the pinching continues at the center or equator. इस तरह से अंदर मूव करते रहेंगे और ये 2 सेल अलग-अलग हो जाएंगे, creating the 2 daughter bacterial cells. So this is
stage number 1. This is the second stage. This is the third stage, and this is the fourth stage of division. So this is how the one bacterial cell, it is divided into 2 bacteria. This is called as binary fission. So it takes 4 phases or 4 stages to be divided into 2. So this is the reproduction in bacteria. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.